computer networks oral examination is actually based on the theory and the practicals that you have learnt in computer network subjects. So computer network and the lab in which you have performed 13 to 14 assignments, and based on that some questions will be asked. Like first assignment is based on forming a LAN. So what kind of a questions can be asked onto it? So first question can be asked like, what is computer network? So uh, so you can define it like computer network is interconnected computing devices that can exchange data, share resources with each other. Okay, so just for elaboration, I have given some diagrams also so that to clear your concepts at what exactly is a network. So you can see that all the computers are connected with each other with a network. Now the next question is, which are networking models? Okay, so which are various networking models? So we have two models like ISO OSI model. We have studied two models. Actually, there are many models. There are IBM model, other models also. SNA model is also there. But we have studied two models, ISO OSI, which is a theoretical model. It has 7 layers in which the first 3 layers are purely software layers, and the below 3 layers are purely hardware layers, while as transport layer is either a way, both way, software as well as hardware. So why it is both software and hardware? Because in computer it is implemented as software, but in devices like gateway it is implemented as hardware, the transport layer. Now the next model is like TCP IP model. So TCP IP model has 5 layers: physical layer, data link layer, network layer are also called as internet layer, transport layer, and application layer. So it is invoked like that we have a sending host in that the data moves from application layer to physical layer, and in receiving host the data is received from physical layer to application layer. So at each layer the data is named at with the different naming conventions. Like in application layer the data is called as the data, in transport layer it is called as TCP segment or UDP segment, in network layer it is called as IP datagram or packet, in data link layer it is called as frame, and in physical layer is also called as frame, and then it is given to the receiving host like this. Okay, you see that the data is intact till the internet layer. That is the data, the same data size is there at TCP, the same data size is there at the network layer. But at the network layer, what happens that it is divided into number of packets based on the type of network. Okay, if the data is too large, huge, then it is divided into number of packets and then into frames like that. Okay, now the next question that can be asked is how to set up a LAN. So we have seen how to set up a LAN. That is, first select the cable. So we have selected the cable like Cat5 or Cat6 cable, and then did a crimping of the cable. Then attach the computer to a switch or directly attach two computers with the cable. Then assign the IP address to computers, and then the test the network using ping command. So that is a typical process that we followed it. Now the next question is how to assign IP address to a computer. So on a Windows machine, you can see that in the Windows machine you have settings. In the settings you can go to the Ethernet settings, and in the Ethernet settings you see the Ethernet properties, and you can see the Internet Protocol version 4, and go to the properties here. In the properties, once you go it, you can assign the IP address in two ways. One is through dynamic assignment, another through static assignment. Static means give the dedicated IP address, and dynamic IP address means get the IP address from the server, like a DHCP server or bootp server, from which assigns the IP address. And then assign the IP address and also assign the DNS server and the DNS server address. If you want to go to wide area network, if you have to access the network with their URL, then we need a DNS address also. So just sample address is given here like 192.168.2.225, and along with that the subnet mask is also to be given, the gateway to be given,
then the DNS server to be given, and an alternate DNS server to be given. Okay, what these are we will elaborate later. Okay, so this is how you can assign the IP address. Now how to test your LAN is working or not. That is, once it is formed, IP address is given, the connection is made, then test whether LAN is working or not. So it is tested using ping command. So that is, open the command prompt, and on the command prompt, the assigned IP address to a next computer, you can ping to that computer and see whether you are getting a reply or not. Okay, so ping uses a ICMP protocol, and it is called as the echo packets. Okay, so these echo packets are sent by ping, and the recipient must give a echo reply. Okay, and once the reply is obtained, then it is shown here as reply. Now the next question is how to crimp the Cat5 or Cat6 cable. So it can be the crimping can be done by a crimping tool, and it can be done as straight through connection or crossover connection. Okay, so now what exactly, this is a crimping tool that you can see it. Okay, so here once you cut the Cat5 or Cat6 cable, then you see the 8 wires within it. Okay, and that 8 wires must be arranged in a particular sequence. Okay, if both the sequences at the both the end are same, then it is called as straight through connection. And while as if the connections at the both ends are different, then they are called as crossover connection. Straight through connection is used when you want to connect the dissimilar kind of a devices, that is PC to a switch or PC to a router. Then in that case, straight through connection is used, while as crossover connection is used when you want to connect similar kind of components like PC to PC or switch to switch. In that case, it is used as crossover connection. Now another question, what are different IEEE standards? Okay, IEEE is a standardizing body which gives the standards for networks, computer networks. Okay, the typical standard that are used in networking is IEEE 802 standard, 802 committee. Okay, so IEEE 802 standard is used for LAN and MAN. Some popular standards are, so first popular standard is 802.3, which is Ethernet standard. Okay, so Ethernet is what exactly is a LAN that we formed it, that is called Ethernet LAN. Another popular standard is 802.11, which is wireless LAN or Wi-Fi standard, in which the laptops, mobiles can be connected through a access point. Another standard is 802.15, which is called as personal area network or Bluetooth network. So Bluetooth is very rampant right now. Everywhere we use a Bluetooth. Even our headphones are Bluetooth. And then how it is connected? So it is connected with the protocol 802.15, okay, which is a Bluetooth protocol. What is the use of access point? So an access point is a device that creates a wireless local area network, or also called WLAN. Usually in an office or large building, an access point connects to a wired router, switch or hub via an Ethernet cable and projects a Wi-Fi signal to a designated area. So this is the typical Wi-Fi access point. Through this, the wireless signals, Wi-Fi radios signals are transmitted. Okay, and so this is how this transmits the signal, and with that signal, the wireless LAN is formed. Now, what are switch, router, hub, and gateway? Explain differences between them. Now, let us understand. This is a very important question. That these are all devices, networking devices, and these networking devices are differentiated based on in which layer they work. For example, the hubs. Hubs is a non-intelligent device, and it works in only physical layer. Then little intelligent is a bridge. Okay, bridge works in data link layer. Then also the switch. Okay, they are intelligent than hub, which works at data link layer. Then we have intelligent device called as router or 3-layer switch, which works in network layer. And then a gateway device, which is highest in the devices, intelligent devices, which understand the transport layer also and the application layer protocol also. Okay, so this is a difference, okay, between switch, router, hub, and gateway. They work at different layers. So the gateway works at application and transport layer, means that it works at all the layers.
Router works only in network, data link and physical layer. Bridge works in physical and data link layer, while as hub works only in physical layer. Okay. Another question, what is network topology used in SCNCOE? So we in a LAN lab, we typically follow the star topology in which the computers are connected to switch. Which version of IP we are currently using? Uh, in the labs, we are using IPv4, but when we see that our mobiles, when we get connected to internet, we get the IPv6 address also. So you can say that we use both IPv4 and IPv6 for our daily use. If you connect computers by hub, which network topology will be formed? It will be formed as star topology. If you connect it by switch, which topology will be formed? Again, it will be formed star topology. Explain Ethernet frame format. So it's very standard frame format, and you can draw the frame format and you can explain each term of it. That is what first term is and all this. So preamble is to synchronize, start frame delimiter indicating the frame is starting. Destination address is a MAC address. Source address is also a MAC address, source MAC address. Length indicates the entire length of the Ethernet frame. Data is either 46 to 1500 bytes data, and then the CRC for error control, which is 4 byte. So this is the Ethernet frame format. What is difference between Cat5 and Cat6 cable? So Cat5, actually CAT stands for category. CAT means category, category 5 or category 6 cable. So you see that the length of the cable thickness increases. Cat 5e has a little thickness, while as Cat 6 it has a bigger thickness, and Cat 6 is also now it's even more bigger thickness. Okay, and here the major difference is like this. Huh? The big difference between Cat5 and Cat6 cables is the amount of data that can be sent. So Cat6 has a higher bandwidth compared to Cat5. Okay, you see that it has more thickness, so it has a more bandwidth. Cat5 can support up to 10 to 100 Mbps at 100 megahertz bandwidth. However, a newer version of Cat5 cable in the market, Cat5e, can support up to 100 to 1000 Mbps at 350 megahertz bandwidth. In comparison, Cat6 can support up to 1000 Mbps, that is 1 gigabit bits per second at 250 megahertz bandwidth. Better yet, a newer version of Cat6 that offers can support up to 1 GBE at 500 megahertz bandwidth. So the difference, major difference is the data rate at which the each cable supports. So in our lab, we use Cat6 cables. So these cables, we typically use it. Now, what do you mean by 10 base T, 100 base T, and 1000 base T? So what exactly it is mean by that? Okay, so base stands for baseband signal. So we have two types of signal. One is a broadband signal and another is a baseband signal. So this base 10 base 5 means it is a thick Ethernet. Okay, and the cable is like this. It's like a our cable connection. You can see it. Then 10 base 2 is a thin net. It is called as it is same as thick net, but it is much wider, much thicker, and it is less thicker. 10 base T is the 10 base T stands for the it is a twisted pair cable. Okay, so category cable is used in 10 base T. Okay, if you see their differences with respect to the speed, the 1000 base T has 100,000 Mbps, while as 100 base T has 100 Mbps speed, and 10 base T has 10 Mbps. So this first number indicates the speed. That is this 10, 100, 1000 indicates the what speed it is transmitting. Okay, so 10 Mbps, 100 Mbps, and 1000 Mbps, like that. What is bridge? What is its significance? And what are different types of bridges? Okay, so bridge is actually a layer 2 device. It is explained to you that it works in data link layer, and it separates out the two LANs. It separates out the collision domain. Just a minute.
Now, so that is a bridge. Actually, we don't use bridges in our labs. We use switches, and switch does the job of bridge also. So bridge was used previously, but now we don't use bridges right now. Okay. So, but still there are some types of bridges like transparent bridge, source routing bridge, and translational bridge. Okay. So the transparent bridge means it is invisible kind of bridge, and it is non-intelligent, little non-intelligent kind of a bridge. Source routing bridge is used in, it is developed by IBM, and in which the it is used for token ring kind of a network. We have a Ethernet network, token ring network. Token ring means it uses a ring topology. Okay, so token ring network, in that source routing bridge is used. And another is also a translational bridge. It is also used in token ring kind of a network. Now, let us come to wireless LAN. We typically use RTS CTS in wireless LAN, which is 802.11. So why do we use it? Okay, so RTS CTS is request to send and clear to send mechanism, and it is a reservation kind of a mechanism. It is used to avoid collision. Okay, and this mechanism is like this: the source first sends RTS, the destination gives the CTS to it, and once the CTS is obtained, then only the data is sent. Okay, this is called as RTS CTS. Actually, this concept is used in CSMA CA kind of a protocol. We have learned CSMA CD, which is carrier sense, multiple access, collision division kind of a protocol, and collision avoidance protocol. So it is used in collision avoidance. So explain CSMA CD protocol. So CSMA CD is carrier sense multiple access protocol, and it is a media access protocol. Data link layer has two types. One is a media access, in which various protocols are there, and in Ethernet we use CSMA CD protocol. There are three types of CSMA CD. One is non-persistent, or it is one persistent. One persistent, that is continuously sense the channel. Non-persistent, do not sense the channel. And P persistent, sense the channel with probability P and then send it. Okay, there are three types of it. Explain CSMA CA protocol. The carrier sense multiple access collision avoidance is a protocol for carrier transmission in 802.11 networks, and it was developed to minimize the potential of collision occurring when two or more stations send their signals over a data link layer, and it is used in wireless network, the CSMA CA protocol. Now these were some questions that could be asked on assignment number 1. Okay, forming a LAN. So various LANs are there, like Ethernet LAN के कुछ questions हो सकते हैं, wireless LANs के कुछ questions हो सकते हैं, and how to form a LAN, that kind of a questions could be asked. Now let us see the next assignment, which is based on Cisco Packet Tracer tool. So what is Cisco Packet Tracer tool? So it is a tool to design and study the network and various networking protocols. So if we see the layout of it, or how it looks like, so it has a window like this, in which we can select the components from here, and we can drag the component here, and we can form a LAN, and we can test it with the help of the ping command. So this Cisco Packet Tracer tool we have used in assignment number 2 to form the wireless LAN, wireless local area network. Now next question is, what is WAN? WAN is a wide area network, and it is a collection of local area networks. It is actually interconnection of the LANs to form a WAN. A WAN is essentially a network of networks, and internet is the world's largest WAN. So it may be asked, what is internet? So you can say that internet is it's a WAN, but it's the largest WAN in the world. What is internet? Internet is the world's largest WAN. When internet came in India, actually the first internet came in India at Chennai. Okay, the physical link is put up in the sea. If we see the diagram of its physical layout, you see that all the sea, like Atlantic Sea, Pacific Sea, all these sea contains the actual physical wires laid down through the sea, and that through sea
The first wire came to us, the internet wire came to us at Chennai, and that came in 1986, and was initially available only to educational and research community first. But when in 1995 VSNL got the first license to give the internet publicly to the uh, people through the telephone connection. Previously the telephone connections were uh, the physical connections, hard connections, I mean wires were there, and through wires the internet was provided to general public, and it was started in 15 August 1995. What are the functions of data link layer? So you see that these are the functions of data link layer. The main function is first access control, which is media access control obtained using CSMA CD or CSMA CA protocol. Then framing, do the framing. So various framing techniques are there, like character count, bit stuffing, byte stuffing, the framing technique. Physical addressing is done using MAC addresses. Error control is done using the stop and wait protocol and sliding window protocol. And flow control is also done using stop and wait protocol and sliding window protocol. The error control is done using automatic repeat request method of data link layer in Ethernet network. Okay, so you can explain each part of it, that what exactly the functions are there if it is asked. You can even say that these are some major functions of data link layer, and if it is asked to you elaborate any one function of it, then you can elaborate one function in detail, that what exactly how that function is implemented. Okay. Explain data link layer protocols that you have studied. So various protocols, these are various actually protocols, but out of that we have studied only HDLC and PPP protocol. Okay, so you can explain the what HDLC and PPP protocols are with the help of their frame format or thing. You can explain it. How data link layer provides error control. So see, error control is provided by two ways in a data link layer. One is only the error detection, that is सिर्फ detect करो error को, and another is error correction, that is at recipient correct the errors. But correcting errors at the recipient requires more number of error control information, which is not typically used. In CRC, error detection is done. So how error detection is done? So sender, what it does, it takes the data and it calculates the CRC using division method, and CRC is calculated, and then data and CRC is loaded into a frame, and that frame is given to receiver. Receiver, what it does, it takes the complete frame, again apply the divisor to it and checks the reminder. If the remainder, sorry, if the remainder is 0, then there is no error, and if the remainder is non-zero, then there is an error. Then just reject it. It cannot correct the error. But we have a Hamming code method. With the Hamming code method, we can correct the error. So burst kind of errors can be corrected using Hamming code. Okay. So this is the CRC method. Now it may be asked the explain the program of implementation of error control that you have implemented, because it's like a implementation kind of a program. So in it, what is expected is that you explain the flow algorithm of your program, actually how you have implemented that program. So in your file, you have the code of the program and the output of the program. So try to understand the flow of it, that how exactly that program is implemented, and in a very short way you must be able to explain it कि पहले मैंने what functions you have implemented, or what is a method flow. It is not expected line by line, only the flow algorithm is expected. How data link layer provides flow control? So flow control is provided by stop and wait method and sliding window method. So you know both the methods, what exactly stop and wait and sliding window are. In the stop and wait, only one frame is sent and then wait for the acknowledgement. While as in sliding window protocol, send multiple frames and then wait for acknowledgement, like that. Okay. So that was about assignment 2. Assignment 3 is on subnetting. So the question is, what is subnetting? What is need of subnetting? Okay, so subnetting is the process of creating a subnetwork, also known as subnets, within a network. And what is the goal of the subnetting?
the goal of subnet is to split a large network into a smaller network, interconnected networks, to help minimize traffic and improve security. So what is that? We have a big network, split it, do the subnetting and divide them into, let's say now here 4 subnets are done. Okay, in this. Okay. So भूपेंद्र जोगी, यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। Now another question is that could be asked that divide the network 192.168.5.0 into 4 subnetworks. अब इसको कैसे 4 subnetworks में divide करेंगे? तो first of all you must understand that the given अब ये network का आगे ये नहीं दिया है, उसका subnet mask नहीं दिया है, तो हमें फिर किस लिए हमें subnet mask कैसे ढूंढना है? From the class of the IP address. Okay, so इसमें class कौन सा आ गया इसका? इसका class है class C. So class C means how many bits are there for network? 24 bits are there for network and 8 bits are there for host. So फिर इसका default subnet mask क्या आ गया? 255. Subnet mask मतलब क्या रहता है? So subnet mask means, let's say you have subnet mask. अभी क्लास सी के लिए क्लास सी इसमें कितने हैं? 24 बिट्स है नेटवर्क के लिए एंड 8 बिट्स फॉर होस्ट. ओके, तो 24 बिट स्टार्टिंग के ऑन करने हैं. स्टार्टिंग के ऑन किया तो क्या हो जाएगा? जस्ट मिनट. So this 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट हो गए. उसके बाद डॉट रहता है इन आईपी एड्रेसिंग. देन 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद डॉट रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके बाद डॉट रहता है एंड देन होस्ट बिट 0 5 6 7 8. ओके, तो इसका हो गया सबनेट मास्क. इसको ऑन कर देंगे. 255 हो गया. 255.255.0. ओके, ये हो गया सबनेट मास्क. अभी इसमें कैसे है? we have to divide this network into 4 subnetworks. 4 subnetworks. तो हमें कितने बिट्स लगेंगे उसके लिए? we need 2 bits. 2 बिट्स. ओके, तो 2 बिट्स लेने के लिए हमें पहले यहां से 2 बिट्स लेने पड़ेंगे. तो ये 2 बिट्स मैंने ले लिए. तो ये 2 बिट्स लेने के बाद ये 2 बिट्स मैंने ले लिए. ओके, तो ये कहां पे आ जाएंगे फिर ये 2 बिट्स? ये आ जाएंगे नेटवर्क में. तो ये नेटवर्क में आ गया मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 करना पड़ेगा और इसको 1 करना पड़ेगा. ओके, इसको 1 1 कर दिया. ओके, ये सारे 1 1 है. 1 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. और ये 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये 1 1 हमें 2 बिट्स लगेंगे इसलिए ये नेटवर्क में ले लिया. तो अब नया सबनेट मास्क क्या बनेगा? तो ये 255 है पहला. ये 255 है. ये सारा 1s है इसलिए 255 हो गया. 255 डॉट ये भी सारा 1s है तो ये हो गया 255. इसके बाद डॉट है. ये भी सारा 1s है तो ये हो गया 255. फिर उसके बाद डॉट है. फिर बाद में ये 1 1 हो गया. तो ये 1 1 हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा? इट इज 192 एज पर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. इट इज 192. तो ये हो गया नया सबनेट मास्क, न्यू सबनेट मास्क ऑफ द डिवाइडेड नेटवर्क. ओके, तो अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि फिर क्या क्या उनके नेटवर्क एड्रेस रहेंगे. ओके, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, with the help of various subnet bits. अब सबनेट बिट्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 00 हो सकती है, 01 हो सकती है, 10 हो सकती है और 11 हो सकती है. ओके, अगर ये 00 होगा तो क्या रहेगा यहाँ पे? एड्रेस रहेगा
ये 00 कर दिया यहाँ पे. If it is 00 and my address network address is 192.168.5.0. ओके, तो ये यहाँ की ये तो कांस्टेंट ही है, ये चेंज तो होना नहीं है, ये कांस्टेंट है. यहाँ का कांस्टेंट, यहाँ के 2 बिट्स का प्रॉब्लम है, तो ये 2 बिट्स के लिए अगर ये 0 होगा तो ये होगा 0, तो हो जाएगा 192.168.5.0. ओके, अगर ये 01 हो गया, 01 हो गया तो क्या नेटवर्क एड्रेस आएगा? तो अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको 01 कर दिया, 01 कर दिया, तो इसका हो जाएगा ये 01 मतलब ये हो गया 64, तो हो गया 192.168.5.64. अगर मैंने इसको 10 कर दिया तो क्या हो जाएगा एड्रेस? ये एड्रेस हो जाएगा 128. ओके, सो दैट मीन्स 192.168.5.128. और अगर इसको 11 कर दिया तो हो जाएगा एड्रेस 192. 192.168.5.198, ये हो गया सबनेट एड्रेस. ओके, अब इसकी रेंज क्या रहेगी? ये 5.0 से रहेगा 64 नेक्स्ट रेंज का ले, तो यहाँ तक रहेगा वो 63 तक ही रहेगा. 192.168.5.63 तक रेंज रहेगी इसकी. ओके, दिस विल बी द रेंज ऑफ द फर्स्ट सबनेट. दिस इज अ फर्स्ट सबनेट के लिए ये रहेगा. सेकेंड सबनेट के लिए क्या रहेगा? सेकेंड सबनेट के लिए रहेगा, अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कहां तक जाएगा, 64 से जाएगा, ये 128 से थर्ड सबनेट स्टार्ट हो रहा है, तो ये 127 तक ही जाएगा. ओके, लाइक दैट. सो यू कैन कैलकुलेट द रेंज of the addresses of the first, second, third and fourth subnet. Okay, so this is how you can do the dividing the network into smaller networks. अगर मैंने बोला कि मुझे 6 सबनेट्स चाहिए, 6 सबनेट्स, तो उसके लिए हमें कितने बिट लगेंगे? वी नीड बाय 2 बिट्स, वी कांट डू इट. 2 बिट्स से हम मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, तो हमें कितने बिट्स लगेंगे? 3 बिट्स लगेंगे. ओके, 3 बिट्स है. इवन 7 सबनेट्स के लिए भी हमें 3 बिट्स ही लगेंगे. 8 सबनेट्स के लिए भी हमें 3 बिट ही लगेंगे. ओके, तो मतलब जैसे बोला गया है उसके हिसाब से बिट्स लेके यू कैन क्रिएट द सबनेट्स. व्हाट इज सुपरनेटिंग? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सुपरनेटिंग इज इट इज अ रिवर्स ऑफ सबनेटिंग. सबनेटिंग में कैसे करते हैं? हम बिग नेटवर्क को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नेटवर्क में. इन सुपरनेटिंग व्हाट वी डू, वी कंबाइन, that is we combine the small networks into a bigger network. So how it is done? So it is done like this. Okay, so here 172.20.0.0/16. अब ये कौन से टाइप का एड्रेस है? ये क्लास का एड्रेस नहीं है, इट इज कॉल्ड एज क्लासलेस एड्रेस. ओके, ये देखो, अगर मैंने एड्रेस ऐसे दिया 192.168.5.1, तो ये कौन से टाइप का एड्रेस है? ये है क्लासफुल एड्रेस. क्लासफुल एड्रेस. और ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है क्लास सी को. बट अगर मैंने ऐसे एड्रेस दिया 192.168.5.1/16, तो ये कौन से भी क्लास को बिलोंग नहीं करता है. इट इज कॉल्ड एज classless address. Okay, it doesn't belong to any class, not belong to any class. This is called as CIDR, that is called as classless interdomain routing. Okay, this is CIDR address. You can call this as CIDR address. So this is CIDR address, while as this is class C address or class full address, and this is class less address. Okay, remember this concept. Okay, so how it is combined? You see that here it is 16 16 16, and if we combine them together it can be formed into 172.20.0.0/14. Typically this is done in
address aggregation that is used in routing. Okay. Supernetting is a technique in computer networking for combining multiple smaller network addresses into a single larger network address. Doing it allows more efficient routing and reduces the size of the routing table. The reason for supernetting is to improve the efficiency of routing in large scale networks. Routing में generally ये करते हैं, and it is also called as address aggregation. You also have this concept in theory called as address aggregation. Okay. Now the next question, what is subnet mask? I already explained you now subnet mask. Subnet mask means it is a represented in ones and zeros, and ones represent the network bits and zeros represents host bits. Okay, in the subnet mask. A subnet mask is a 32-bit number created by setting host bits to all zeros and setting network bits to all ones. In this way, the subnet mask separates the IP address into the network and host address. Okay. Now, what are the different classes of IP addresses? कौन से classes है IP address के? And which class do we use in SKNCOE? हम SKNCOE में कौन से class को use करते हैं? Okay. So we have 5 classes, and class A means net ID is 8-bit, host ID is 24-bit, class B 16-bit net ID, host ID 16-bit, class C net ID 24-bit and host ID 6-bit. While as class D is multicast and class C is reserved. Okay, they are not at all used. You can even see the range, that what range they are. It is from 1 to 126 in class A. 127 is reserved for loopback and testing. The class A address 127.0.0.0 to 127.255.255.255 cannot be used and it is reserved. While as class B, so these are the addresses of the various classes and their subnet mask, default subnet mask. In SKNCOE, we use class C IP address having network address 192.168.0.0 with subnet mask 16-bit. Okay, so that is we use this address 192.168.0.0. It's a network address, and the subnet mask is 16-bit. Actually, this address is a private address. You can call this as private address. Okay, we will understand what do you mean by private address and public address. Okay, it is a concept in the IP addressing, private and public IP address. For given IP address 192.168.1.5, what is subnet mask? Now इसमें अभी ये it is CIDR, it is not CIDR, it is class full address. So आप इससे कैसे पता कर सकते हैं? First octet से पता कर सकते हैं कि कौन से class से. So this IP address belongs to class C IP address, and its subnet mask is default subnet mask, which is 24-bit 255.255.255.0. How many maximum host nodes you can have in class C network? So class C network has 24 bits for network and 4 bits for host. Sorry, 8 bits for host. It's wrong there. 8 bits for host. So how many hosts can be connected? So it can be connected 2⁻²8, that is 256 host. -2. Why -2? Because the one host bits with all 0 is reserved for network address, and the host bits with all ones is reserved for broadcast address. So ये दो तो reserve हो गए, एक network address के लिए और एक broadcast address के लिए. So उसको minus कर दिया. So total address is 256 - 2, which is 254 host. So class C, we see that it is 24-bit subnet mask. What do you mean by private and public IP address? Okay, so private IP address, it is a distinction given. Private IP address are non-routable
or they are used only within the network, while as public IP address are routable addresses and which are used to no outside world. To have an analogy, let us understand that, for example, we stay in India. So India is the public address of us because everyone knows us. Outside world knows us. We are Indian. They don't understand us. We are Maharashtrian or we are UP or we are Bihar. They don't understand like this. They understand us like we are Indians. So India is the public address. While as within India, हमको route करने के लिए हम बोल सकते कि हम we are Pune, we are Mumbaikar, we are Laturkar, like that. Okay, so that inside it is a routable. That's called private. But outside world doesn't understand that. Outside world understand only one address, which is called as public address. तो हमें अब इसको कैसे, इसको 3 रेंज दिए गए प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। तो फर्स्ट रेंज है 10 की, एक रेंज है, दूसरी है 172 की और थर्ड रेंज है 192 की। तो वो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है? 10.0.0.0 टू 10.255.255.255 इतने एड्रेसेस हम दे सकते हैं प्राइवेटली। Anyone can give it in their land. They don't have to take permission from the ICANN. अब कौन सी अथॉरिटी आईपी एड्रेसेस अलोकेट करती है? So the one is ICANN, which is I don't know the long format, but you can find a long form of it. It's a committee, ICANN, which gives the IP address. तो ये 3 ranges है which can be given as private IP addresses. Okay, 172 key or 192 key. Okay, and here the difference, public and private. Public is used over the WAN, while as private is used over the LAN. And it is recognized over the internet public. They are not recognized on the internet. They are only recognized within the LAN. Public IPs are unique over the globe. It cannot be repeated, while as private IPs are unique within the LAN. And they can be repeated over multiple LANs. Okay. Public IP are paid. इसको पे करना पड़ता है इस IP एड्रेस के लिए. Private IP addresses are free. You don't have to take this one. And assigned by public IP address is assigned by network administrator, and the private IP address is assigned by the. नहीं, actually public IP addresses are assigned by IANA. ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये यहाँ पे चाहिए. And private IP address is assigned by network administrator. Locally network administrator दे सकता है उसको. Okay. Next question. What is classless interdomain routing? Okay. Classless interdomain routing, you see, I already told you what exactly it is. So this is classless interdomain routing. That is the // followed by 16. Okay, this is the interdomain routing. अगर मैंने ये एड्रेस दिया तो उसका सबनेट मास्क क्या रहेगा? लेट्स से मैंने एड्रेस दिया 192.168.5.15 let's take it is 17. Okay, ये इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा? What is subnet? This is CIDR address. This is CIDR address. Calculate its subnet mask. तो क्या रहेगा? तो हमें इसका मतलब 17 बिट्स को ऑन करना है. Okay, we have to on the 17 bits, which is a network bit. तो करो 17 bits on 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट हो गया 9 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद डॉट 17, उसके बाद सारे 0. एक हो गया 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया सबनेट मास्क. अब इसको लिख दो नंबर, डेसिमल नंबर में. तो डेसिमल नंबर में आ जाएगा 255.255 डॉट, ये तो 255 हो गया, ऑल वंस है इसलिए. ओके, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये ऑल वंस हो गया. अब ये 1 है यहाँ पे, तो 1 का मतलब यहाँ क्या हो गया? 128. ओके, सो इट इज 128 डॉट. अब ये इसकी वैल्यू 128 हो गई, तो ये 128 आ गया. और इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू 0, तो ये हो गया 0. तो हमारा सबनेट मास्क क्या है फिर? 255.255.128.0. हो गया हमारा सबनेट मास्क. अगर ये 18 रहता था
18, तो क्या सबनेट मास्क रहता था, तो इसको भी 1 कर दो फिर 18 बिट्स के लिए, तो फिर सबनेट मास्क आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 128 नाउ इट इज 192, ये हो गया हमारा सबनेट मास्क. Okay, so such a question can be asked that this is a IP address, find the subnet mask. Now next question could be asked, what is NAT and how NAT procedure works. NAT is network address translation. तो जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे हमें बाहर जाना रहता है किसी let's say if we have to go to US, then we call ourselves as Indian. We don't call it ourselves as Punekar or any other. We call it ourselves as Indian. So उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, हमारा पुणेकर से हमारा नाम क्या हो गया, इंडियन हो गया. तो इंडियन के लिए मतलब यही ऐसे होता है कि इस लोकल कंप्यूटर का नाम है 10.0.0.1, बट ये जब इंटरनेट पे जाएगा तो वो 10.0.0.1 से नहीं जाएगा, वो जाएगा अनदर एड्रेस से. वो एड्रेस है पब्लिक एड्रेस से, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इस नाम से पब्लिक एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वो हो गया ट्रांसलेशन, नेटवर्क का एड्रेस ट्रांसलेशन. तो अभी कैसे इसका सोर्स आईपी है 10.0.0.1, अब ये चेंज हो जाएगा, इसका एड्रेस है 150.150.0.1, तो ये चेंज हो गया, इसका सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, ये हो गया. डेस्टिनेशन वही रखा, जब डेस्टिनेशन से आएगा वापस तो डेस्टिनेशन को आएगा इस 200.100.10.1 को, तो उसको अगेन फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा सोर्स आईपी एड्रेस से विच इज 10.0.0.1 से, तो हो जाता है दिस इज कॉल्ड एज द network address translation. Another question, logical question can be asked, can you assign more than one IP address to a computer having only one LAN card? Yes, we can assign multiple IP addresses to computer having only one LAN card by using multiple interfaces. Okay, ये हम कर सकते हैं. Add another IP address, मैं आपको करके दिखाता हूँ. For example, मैं Ethernet खोलता हूँ, सेटिंग्स, तो इथरनेट में हम चले गए, तो यहाँ पे देखो एक चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे एक वाईफाई है और एक इथरनेट है. तो लेट्स से इथरनेट पे जाएंगे, लेट अस सी इट्स प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में जाके हम TCP/IP इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक है ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इन यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस, तो मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया उसको 192.168.5.1, तो इसने कुछ आईपी एड्रेस ले लिया. ओके, तो ये हो गया. अब एडवांस में चले गए, तो यहाँ पे देखो फिर से ऐड कर सकते हैं हम. लेट अस ऐड वन अदर एड्रेस 190, लेट्स से मेरा दूसरे नेटवर्क पे भी है, 172 के नेटवर्क पे भी है 172.16.5.1 और सबनेट मास्क लेट्स से दिस इज. तो ये देखो मेरा अभी 2 आईपी एड्रेस है मेरे मशीन को, इथरनेट एड्रेस को. सो वी कैन ऐड मल्टीपल आईपी एड्रेसेस टू अ सिंगल लैन कार्ड. ओके, हो गया. Why there is a need to make different classes of IP? क्यों जरूरत पड़ी? Why to have multiple classes? An IP address class is needed to provide a way to divide IP addresses into groups. This is important because it makes it easier to manage and organize them. IP address class was developed keeping in mind different classification of users. अलग अलग क्लासिफिकेशन थे. पहले क्या था कि कुछ लोगों को बहुत आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको बहुत एड्रेसेस चाहिए थे. तो इन दैट कंसिडरेशन ऐसे यूजर्स के हिसाब से बनाए कि जिसको बहुत एड्रेसेस लगते हैं उसको क्लास ए का एड्रेस देने का, जिसको मीडियम एड्रेसेस लगते हैं उसको क्लास बी के लिए, और जिसको कम एड्रेसेस लगते हैं उसको क्लास सी के लिए. बट इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि यूजेबिलिटी कम हो गई. आईपी एड्रेस हर कोई अपने पास रखने लग गया, और दैट क्रिएट्स द क्रंच ऑफ आईपी एड्रेस, शॉर्टेज ऑफ आईपी एड्रेस. तो व्हाट इज अ solution to it? So it is obsolete now. It's classful addressing. Classes IP address is obsolete. Another is that it is classless IP addressing, that is CIDR addressing, which gives the flexibility of taking any number of IP address in the power of 2. So we can take 4 addresses, 4 addresses, 8 addresses, 16 addresses from the authority for our network.
Can you form LAN without IP address? Yes, we can form a LAN without IP address. But ये हमारी LAN कॉलेज की LAN नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि उसमें जो LAN कार्ड है वो IP एड्रेस को ही अंडरस्टैंड करता है. अगर हमारा कार्ड अंदर डाला जाए, वो जो इथरनेट एड्रेस को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है, only the MAC address it understands. And हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होगा which with the help of only MAC address it communicates, then we can form a LAN. Example could be the token bus LAN or token ring LAN, but not Ethernet LAN. Okay. Can you give IP address to a switch? अब स्विच के दो टाइप्स है, एक है लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच. लेयर 2 स्विच मतलब वो डेटा लिंक लेयर में वर्क करता है, और लेयर 3 स्विच मींस इट वर्क्स इन द नेटवर्क लेयर. जो नेटवर्क लेयर में वर्क करता है उसे हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं. जो लेयर 2 में वर्क करता है, फॉर दैट वी कांट गिव आईपी एड्रेस. What are the functions of network layer? So see, these are various functions of network layer. Internetworking, host-to-host delivery of data, logical addressing, routing, fragmentation, packetizing, congestion control. So these are the various functions of network layer. तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है what are the functions, then you can list down these functions, and उसमें से आप किसी एक फंक्शन बोला कि ना एक्सप्लेन राउटिंग, तो आप राउटिंग बता सकते हैं कि राउटिंग के टाइप्स क्या है, कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, क्या है वो आप इंडिविजुअली आप हर एक को लेटर यू कैन एक्सप्लेन इट इफ इट इज आस्क्ड. Sir, What sorry is? for interruption. हाँ हाँ. I wanted to ask, are these questions enough for preparation, as I don't know much of the topics? हाँ, ये कैसे है कि एक इनिशियल लेवल के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चंस इनफ है इनिशियल लेवल पे, पर आपको डिटेल में जाना है, आपको और भी अच्छे से करना है, तो इसमें आप और डिटेल में जा सकते हैं. अगर इतना आपने किया तो सफिशिएंट है, मतलब एज अ एंट्री लेवल के लिए, बट इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा आपको. फॉर एग्जांपल फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर में मैंने इसमें डिटेल में नहीं बताया कि इंटरनेटवर्किंग क्या है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी क्या है, ये डिटेल में नहीं बताया. ये आप डिटेल में जा सकते हैं. लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है, ये आपके सिलेबस में है. Logical addressing matlab giving IP addressing to a machine. Host to host delivery means sending data from one computer to another computer. Routing means in between sending the data from one router to another router. Fragmentation matlab dividing the data into multiple packets, that is fragmentation. Packetizing matlab again dividing the data into number of packets and assigning them the IP header. And congestion control means applying the congestion at network layer. तो आप ये बता सकते हैं, आप इवन कंजेशन क्या है ऐसे भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ARP एंड RARP? सो ARP इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल which converts the IP address into a MAC address, and RARP is reverse address resolution protocol which converts the MAC address into a IP address. जैसे अब यहाँ पे देखो ये ARP है. So requesting the MAC address of the IP address 34.40.21.20. मतलब इसको IP address पता है बट इसका MAC address नहीं पता है, तो वो क्या करता है फिर, वो ARP पैकेट सेंड करता है ऑन टू अ नेटवर्क, और whoever has the address 34.40.21.20 वो उसको रिप्लाई करता है कि मेरा MAC एड्रेस ये है. जैसे मैंने अनाउंस किया क्लास में कि हु इज फ्रॉम मुंबई, तो जो भी मुंबई से है तो वो बताएगा कि आई एम फ्रॉम मुंबई. सेम थिंग, इट्स लाइक ARP प्रोटोकॉल, क्योंकि मुझे पता है कि मुंबई का मतलब मुझे नाम पता है मुंबई का, मुझे पता करना है मुंबई से कौन है, बट मुझे पता नहीं कौन है, तो जो है वो हाथ ऊपर करेगा कि बताएगा आई एम फ्रॉम मुंबई, लाइक दैट. सो सेम इट्स ARP. तो जैसे होस्ट बोलता है कि मेरे पास IP एड्रेस है बट मुझे उसका MAC एड्रेस नहीं पता है, तो वो बोलता है कि ये इस IP एड्रेस का MAC एड्रेस क्या है पता है क्या किसी को, तो जिसका है वो उसको रिप्लाई करता है. in reverse ARP RARP MAC address is mapped to IP address. तो अभी इसमें कैसे होता है कि इसमें MAC एड्रेस पता रहता है बट IP एड्रेस पता नहीं रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें डायनामिक असाइनमेंट ऑफ IP एड्रेस में क्या 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 रहता है कि MAC एड्रेस पता रहता है. प्लीज स्विच ऑफ द म्यूट द माइक्रोफोन. RARP में क्या रहता है कि हमें MAC एड्रेस पता रहता है बट उसका IP एड्रेस पता नहीं रहता है.
when this delivery driver picked up a Sir, your mic is mute. Okay. थैंक यू विल कंटिन्यू. हाँ, लेयर 3 स्विच में कैसे रहता है कि बोथ वर्क एट नेटवर्क लेयर. अगर हमें लैन पे ही रहना है तो हम लेयर 3 स्विच यूज कर सकते हैं, पर अगर हमें वैन पे जाना है, इंटरनेट पे जाना है, तो देन वी नीड अ राउटर. ओके, सो दैट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन लेयर 3 स्विच एंड राउटर. क्लासिफाई राउटिंग प्रोटोकॉल्स. राउटिंग प्रोटोकॉल्स 3 टाइप्स के, वन इज स्टैटिक, अनदर इज डिफॉल्ट एंड डायनामिक. ओके, so dynamic routing protocols are used in which we have IGP protocol, which is interior gateway protocol, and exterior gateway protocol. तो मतलब within the autonomous system, single autonomous system अगर हमें routing protocol use करना है तो IGP use करते हैं, और multiple autonomous systems के लिए gateway protocol use करते हैं. तो IGP क्या करता है? 3 types of algorithms are used: distance vector routing, link state routing, and hybrid of distance and link state. And exterior routing जो है वो it uses a path vector. And examples of these protocols are RIP protocol, which is routing information protocol. OSPF is a link state protocol, which is open shortest path first protocol. And hybrid is EIGRP, which is enhanced interior gateway routing protocol. Another type of distance vector is also IGRP, which is internal gateway routing protocol, and ISIS, which is intermediate system routing protocol. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what is the difference between link state routing and distance vector routing? So you see that the dynamic, both are dynamic routing protocols. You can say that the similarity is that both are dynamic. Okay, only the difference is that in this distance vector routing, only the neighbor information is collected, and that information is only given to neighbors. Okay, and then neighbors update it and again sends to neighbors. Okay, and it is done periodically, distance vector routing. While as in link state routing, the routing information is only given when there is a change. Change मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल XYZ राउटर है, इसमें का Y राउटर शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो यहाँ पे कुछ तो चेंज हो गया, टोपोलॉजी चेंज हो गई, या फिर डिवाइस शट ऑफ हो गया. तो इन दैट केस ओनली द लिंक स्टेट राउटिंग अपडेट्स द राउटिंग इंफॉर्मेशन. In another case, link state routing doesn't update the information. अगर ये constant रहता है तो link state routing doesn't give any routing information, doesn't share any routing information. So these are the, again, dividing the protocols. Now another type of assignment after routing is the based on TCP sockets and UDP sockets. So what is socket? So socket is a one endpoint, or it's an endpoint of two-way communication between two programs running on the network. Okay. For example, here we have the client IP address 192.168.1.10. ये network address हो गया. Now what is a transport layer address? Transport layer address is also port address, okay, which is 16-bit address. So port address along with the client IP address is a socket address. Socket address में दो चीज होती है, एक IP address होता है और दूसरा होता है port address. Okay, so socket address has two things, IP address and port address. So socket is end point of communication. मतलब एक application दूसरे application से communicate कर सकता है with the help of socket. Okay. Again, you can see that one process A and process B are communicating with the help of socket, okay, through IP network. Explain different socket calls. Okay, various socket calls are there. We can see that in TCP we have different socket calls, and in UDP we have different socket calls. Okay, let us try to understand that the TCP is a connection oriented, in which the server first
what it does, it creates a socket, binds a socket, then listen to a service. Another listen is there and accept is there. Okay. While as in client, the socket is created and then connect. Okay. The connect comes to accept. Okay. And the accept here, what happens, the three-way handshake takes place in connection oriented, and then the connection is formed. And then with the help of read and write, the data can be exchanged. Okay. This is the sequence of socket calls between for the connection oriented service. In connectionless service, there is no listen and accept in the connectionless, in the UDP. It just binds it, and client, what it does, it just it directly sends the data. So there is no three-way handshake, there is no connection formation, and it sends the data. So UDP is the protocol which is connectionless, and TCP is a protocol which is connection oriented in transport layer. So this is explanation of each socket call. So socket, what it does, it creates the socket. Bind, what it does, it associates the port number and IP address to a socket. Listen, what it does, it prepares the connection oriented server to accept the client connections. And then we have connect. With the help of connect, the client can connect to a socket, and accept initiates the three-way handshake. Okay. With the help of accept, the three-way handshake takes place. Now, what is three-way handshake? So three-way handshake is nothing but sending the three types of packet called as SYN packet, which is called as synchronized packet. So first, what client does, client sends the synchronized packet having some sequence number. Then server, what is does, server gives the acknowledgement to that synchronized packet, which is called SYNAC. And then it gives the acknowledgement. The client gives the acknowledgement to a server. So three messages are exchanged. Therefore, it is called as three-way handshake. First is SYN, then SYNAC, then ACK. Then connection is formed. Now, what is it's a very important question that could be asked, that what is node to node, host to host, and end to end or process to process communication? So see here that this is one computer is communicating with another computer through the internet, through the WAN. So in between it is going through various routers. Okay. You see that from one computer is communicating with this router. This is called as one node. This is called as another node. This is called as node to node communication. And this node to node communication is happening with the help of a data link layer. Now this computer data is received to this computer. This is called as host to host delivery. And this is done with the help of network layer. And now ye computer mein another processes is working. That is process 1, process 2, process n. And this computer is also working various processes. Process 1, process 2, process 3. So इस process से इस process को communication जो होता है, that is called as process to process communication or called as end to end communication. And this is done with the help of transport layer. तो समझ में आ गया, नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है डेटा लिंक लेयर से, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क लेयर से, और प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से. ओके. Excuse me, sir. हाँ. Sir, there's a question of subnetting from prelim. Can you just explain it, please? I have already explained that has come into that one. It's already explained how to do subnetting. I'll share the video. In the video you can listen. Okay. Okay. Actually, I had some connectivity issues. Yeah. Okay. Okay. Now, what are the functions of transport layer? So these are various functions of transport layer: end-to-end delivery or process-to-process delivery, addressing, which is socket addressing, reliable delivery, that is with the help of TCP, flow control with the help of sliding window protocol, and multiplexing with the help of dividing the data into multiple packets. Another now questions is application layer questions. What is DNS? So DNS is like a directory service. Human can understand only the readable names, like for example www.google.com
or amazon.com. It is easy to remember. But if it is asked to remember with the number, it is not possible. Then who does it? Who converts the name into IP addressing? Because in internet, the machines are identified by numbers, not by pure names. Routing is not done with the help of names. Routing is done with the help of numbers. Because on numbers, we can do easy calculation. एंडिंग कर सकते हैं, ऑरिंग कर सकते हैं, एक्सऑर कर सकते हैं. हम टेक्स्ट पे एंड और एक्सऑर नहीं कर सकते. तो नंबर्स के लिए फिर क्या होता है कि डीएनएस सर्विस इज देयर विच कन्वर्ट्स द नेम इनटू आईपी एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है, पहले क्लाइंट गिव्स द डीएनएस रिक्वेस्ट एंड जो डीएनएस सर्वर होता है वो डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्स करता है उसको कि उसका क्या आईपी एड्रेस है. अब डीएनएस के 10 टाइप के records, another various 10 types of records, just like a record or 4 times a record, CNAME record. It is based on what type of DNS server it is. It has that records. Okay, typically the low level DNS, that is third level DNS, has the record of A. Okay, DNS queries has 3 types. कौन कौन से 3 types की queries है? एक है iterative query, दूसरी है recursive query and reverse query, non-recursive query. So these are various types of queries in DNS. So इसमें query कैसे handle होती है? देखो यहाँ पे ये मशीन है, जैसे requesting host, इसने क्या भेजा, इसने local DNS सर्वर को पूछा कि IP एड्रेस क्या है dns.nyu.edu का. तो उसने क्या किया, वो रिक्वेस्ट भेज दी रूट DNS सर्वर को. रूट DNS सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा कि इसका आंसर मुझे पता नहीं है, इसका आंसर है टॉप लेवल डोमेन डीएनएस सर्वर के पास. तो देन दैट क्वेरी गोज टू द डीएनएस सर्वर एंड देन दैट सर्वर गिव्स अ रिस्पॉन्स बैक टू लोकल डीएनएस सर्वर. Local DNS server gives the query to authoritative DNS server and then it gives a reply back. And once the local DNS server obtains the IP address, then that IP address is given to the requesting host. This is called iterative query. अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. See now how many number of queries are transferred to each other. ये हो गया recursive type of query in which इसका क्या करता है कि instead of giving a reply to previous station, it gives again a request to the next station, like that. It is called as the recursive query. Now there are 2 types of DNS service. One is a forward DNS service and another is a reverse DNS service. Forward DNS service मतलब क्या है कि name to IP address is forward DNS service and reverse DNS सर्विस मतलब क्या है, मुझे IP एड्रेस पता है बट उसका डोमेन नेम नहीं पता है. तो फिर हम क्या पूछ सकते हैं, हु इज द IP एड्रेस. तो उसमें क्या हो जाता है कि देन इट गिव्स रिटर्न्स द नेम ऑफ दैट हु इज हैविंग दैट IP एड्रेस. ओके, अभी जैसे DNS सर्वर्स के 3 टाइप्स है, जैसे मैंने आपको बताया, एक 4 टाइप्स, एक है लोकल DNS सर्वर, another है root DNS server, then top level domain DNS server and another is authoritative DNS server. तो ये types है DNS server के. root server is a top level, you can call it a DNS server. ऐसे total 13 DNS servers है पूरे entire world में और ये 13 DNS server के addresses है कि कहाँ पे है. Typically they are all in US and these one, okay, like NASA, US Defense, US Army. So they are having the DNS servers. Okay, even University of Maryland, they are having a root DNS server. Okay, उसके बाद आ जाता है top level domain name server, जैसे .edu हो गया, .com हो गया, .uk, .in, ये हो गया top level domain server. तो इसमें क्या हो जाता है, ये कंट्री वाइज रहता है जनरली. तो ये हर एक कंट्री में जगह पे ये DNS सर्वर दिए जाते हैं. नाउ यू हैंडल दिस DNS सर्वर्स. अनदर DNS सर्वर इज ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर इन विच इट हैंडल्स द जैसे अब इसमें हो गया .com का एक हो गया, तो .com में भी मल्टीपल एंट्रीज आर देयर, जस्ट लाइक google.com, sinhagad.edu, and another is amazon.com. तो amazon की एंट्री अनदर DNS सर्वर में हो सकती है, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर में हो सकती है. गूगल की एंट्री अनदर सर्वर में हो सकती है, ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर. तो जिसके पास वो एंट्री रहती है दैट रिटर्न्स द IP एड्रेस.
what is DNS lookup? Okay, so DNS lookup is like this, just like I told you, that is ये मशीन क्या है, इसके पास URL है और उसको IP एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो ये प्रोसेस से इट हैपेंस द DNS lookup. Okay, now next is what is Wireshark tool? So Wireshark is a network protocol analyzer tool. इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम पैकेट कैप्चर कर सकते हैं. पैकेट कैप्चर करके हम उससे स्टडी कर सकते हैं, उसके हेडर क्या है, उसमें डेटा क्या है, ये स्टडी कर सकते हैं. जैसे जैसे ये अभी ये पैकेट कैप्चर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, TLS जो सिक्योरिटी SSL काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल है, तो उसको स्टडी करने के लिए ये TLS सिक्योरिटी का कौन सा वर्जन है, इट इज यूजिंग 1.2 वर्जन. इसकी TCP लेंथ कितनी है, डेटा क्या है. So these all can be studied with the help of Wireshark tool. List various protocols of layers. अलग अलग layers के कौन कौन से protocols है. तो TCP/IP में जो 5 layers हैं, तो data link layer which is network access layer is also called network access layer, data link layer. तो यहाँ पे कौन कौन से protocols है, यहाँ पे है PPP protocol, HDLC protocol, Ethernet protocol. So these are some protocols in data link layer. Network layer में कौन कौन से protocol है, और internet layer में, इंटरनेट में है IP प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल्स है RIP, OSPF, BGP. These are routing protocols. Even ARP protocols work in both internet and data link. It is partially, it is not completely in network layer and not completely in the data link layer. So it is middle of it. You can call it ARP, which is address resolution protocol, and RARP protocol. ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, 2 प्रोटोकॉल है, UDP एंड TCP. अनदर प्रोटोकॉल इज आल्सो देयर लाइक STCP व्हिच इज प्रोटोकॉल. एप्लीकेशन लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल है, नेम सिस्टम के लिए DNS, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब डायनामिक IP एड्रेस असाइन करने के लिए BOOTP एंड DHCP. ईमेल के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है, SMTP, POP, IMAP. फाइल ट्रांसफर के लिए FTP, TFTP. वेब के लिए HTTP. So these are the protocols at the application layer. अब ये लिस्ट, अब लिस्ट पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल वर्क होते हैं, तो आप इसको सेगमेंट क्लासीफाई करके बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में अलग अलग सर्विसेज होती है. एक DNS सर्विस होती है, वेब एक्सेस सर्विस होती है, फाइल ट्रांसफर सर्विस होती है, ईमेल एक्सेस सर्विस होती है. तो अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं. जैसे ईमेल के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. What are major functions of proxy server? So proxy server actually it works if you want to hide within the internet, then on behalf of proxy you can go onto internet, so it hides your identity. What is firewall? Is it software or hardware? Firewall is like agar we have to restrict the traffic, that is some domains or some we have to restrict it. जैसे लेट्स से मुझे YouTube ब्लॉक करना है, तो थ्रू फायरवॉल आई कैन ब्लॉक द YouTube. ओके, दैट इज स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, आई कैन ब्लॉक इट. ओके, सो फायरवॉल इज इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अगर हमारे कंप्यूटर में देखा जाए तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, और अगर नेटवर्क में देखा जाए तो फायरवॉल इज अ हार्डवेयर. ओके, जैसे ये सिस्को का फायरवॉल है and it is Cisco ASA firewall. Another firewall is a Sonic Wall firewall, that is with the Sonic company, Sonic Wall firewall. वो हार्डवेयर में रहता है, तो that can be put up and through access control list these firewalls can be configured. Okay, what is DHCP and BOOTP? So these are protocols for dynamic assignment of IP address. So how it works? So first what IP connected devices request भेजता है DHCP सर्वर को, and DHCP सर्वर क्या क्या असाइन करता है उसको IP एड्रेस असाइन करता है, डिफॉल्ट गेटवे असाइन करता है, सबनेट मास्क असाइन करता है, DNS सर्वर भी असाइन करता है. ओके, सो DHCP सर्वर असाइंस इट. व्हाट इज URL? URL मतलब हम जो IP यहाँ पे लिखते हैं वेब ब्राउजर में, उसको URL बोलते हैं. इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसके अलग अलग टाइप्स है. पहला तो प्रोटोकॉल होता है जिसको स्कीम्स बोलते हैं, जैसे HTTPS, तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड है प्रोटोकॉल विच यूजेस SSL प्रोटोकॉल. ये है डोमेन्स. ओके, इट
डोमेन में भी अलग अलग डोमेन्स है। टॉप डोमेन कौन सा है? कॉम। उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन क्या है? हब स्पॉट। और सब डोमेन क्या है? ब्लॉग। और डायरेक्टरी, इस डोमेन में कहाँ जाना है? ये डायरेक्टरी में जाना है, मार्केटिंग। सो दिस फर्दर इज अ डायरेक्टरी। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी? अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सो वी हैव 3 important principles of security, which is called CIA principle, and one more principle is added to it, which is called as CIAN principle, which is first is C, confidentiality, I is integrity, A is availability, and N is for non-repudiation. Okay, so these are 4 pillars of the security. Okay. अब हर एक में क्या क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ये आपको पता है, मतलब दैट कैन बी एक्सप्लेन। ओके, विच आर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से टाइप से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? सो वी कैन कम्युनिकेट बाय 2 ways, सिंप्लेक्स मेथड एंड डुप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मतलब एक ही डायरेक्शन से, ओनली वन डायरेक्शन। डुप्लेक्स मीन्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, बोथ द वे। हाफ डुप्लेक्स मतलब बोथ द डायरेक्शन बट one at a time, and full duplex means both the direction both at the same time. ये फुल डुप्लेक्स। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये है फुल डुप्लेक्स, सॉरी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, बट इट इज हाफ डुप्लेक्स। इसमें मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जब आप बोलेंगे तब मैं सुनूंगा, तो मतलब ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। अगर किसी का माइक ऑन रह गया, मैं भी बोल रहा हूँ और माइक भी बोल रहा है, मतलब दूसरा पर्सन भी बोल रहा है, तो वो हो गया फुल डुप्लेक्स, बोथ आर communicating at the same time. What is unicasting, multicasting and broadcasting? Give their examples. Okay, so unicasting meant one to one communication, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को। multicasting one to many computers and broadcasting one to many computers. अभी इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? unicasting मतलब जैसे हम वेब एक्सेस करते हैं, तो ये हो गया unicasting। जैसे आपने डाला www.google.com, आपकी रिक्वेस्ट गई गूगल सर्वर को और गूगल सर्वर ने आपको रिप्लाई दिया, वन टू वन कम्युनिकेशन हो गया। ओके, मल्टीकास्टिंग का एग्जांपल क्या है? मल्टीकास्टिंग मतलब अभी जैसे वी हैव अ ग्रुप, फर्स्ट लेट्स ब्रॉडकास्टिंग एग्जांपल। जैसे अभी ARP रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरा ये मैक IP एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस क्या है, तो ये रिक्वेस्ट जाती है सारों को, ऑल। सो इट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट, सेंड टू ऑल। और इसमें से कुछ लोगों को जानी चाहिए, तो हो गया मल्टीकास्ट। अब इसका एप्लीकेशन, ब्रॉडकास्ट का एप्लीकेशन है ARP is a application of broadcast. Even DHCP is application of broadcast. BootP is application of broadcast. HTTP is application of unicast. Multicasting application is DNS. Typical, it is a application of multicast, जिसमें क्या हो जाता है, एक क्वेरी मल्टीपल सर्वर्स को जा सकती है। ओके, not all servers, multiple servers, but not all servers. Okay, so this is multicasting. Examples. Okay, what will you do to minimize broadcasting in a network? अब हम broadcasting कैसे minimize कर सकते हैं? अगर network को divide कर दिया तो broadcasting reduce हो जाएगा, so we will do subnetting. What do you mean by router works at network layer? It means that router understands and performs functions of network layer. वो network layer के functions करता है, इसलिए we say that it works in network layer. What is autonomous system in routing? So it is a region of the internet that is administered by single entity. अब ये देखो, ये single entity है, ये हो गया autonomous system 1, ये autonomous system 2, ये autonomous system 3. Within this autonomous system is called interior autonomous system, and this is exterior. So exterior routing protocol is used for एक autonomous system से दूसरे autonomous system को communicate करने के लिए. How network layer provides connection oriented service? अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस IP से तो नहीं मिल सकती, क्योंकि IP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन लेस। तो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल सर्किट्स। तो वर्चुअल सर्किट से कैसे होता है कि इट हैज अ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। अगर हम ये पढ़ेंगे तो थ्रू वर्चुअल सर्किट्स वी कैन प्रोवाइड इट। हाउ नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस सर्विस? नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस सर्विस थ्रू डेटाग्राम और कॉल्ड एज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इस तरह से हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, एनी पैकेट कैन ट्रैवल एनी ऑफ द राउटर, ये कौन से भी राउटर को जा सकता है, कौन सा भी पाथ ले सकता है। सो इट इज अ कनेक्शन लेस। बट कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हो जाता है कि पाथ फिक्स हो जाता है। पाथ फिक्स होने की वजह से इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड। फर्स्ट फिक्स द पाथ देन सेंड द डेटा, इज कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे पाथ फिक्स नहीं है, कोई भी पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हो गया कनेक्शन लेस।
What is the minimum and maximum length of header in TCP segment and IP datagram? अगर TCP प्रोटोकॉल ले तो मिनिमम हेडर साइज 20 बाइट्स है और मैक्सिमम 60 बाइट्स है. अगर ये देखा तो देखो यहाँ पे ये है TCP हेडर, तो ऑप्शनल डेटा अगर 0 हो गया तो ये 20 बाइट है, और ऑप्शनल डेटा अगर 40 बाइट्स हो गया तो हो गया 60 बाइट्स. ओके, UDP 8 बाइट है मिनिमम, मैक्सिमम 8 बाइट्स है. UDP हेडर में ये नहीं है, उसका क्या बोलते हैं there is no data, only the source port and destination port and the another flow information is there. IP का है minimum header size 20 byte and maximum is 60 byte. So this is like this. So this is a 20 byte and options field is 0 to 40 bytes. तो अगर हो गया तो वो हो जाता है 40-60 bytes. What are the data units at different layers of the TCP/IP protocol suite? तो कौन कौन से डेटा यूनिट्स हैं? तो OSI मॉडल अगर ले तो पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में क्या बोलते हैं? उसको डेटा बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बोलते हैं? उसको सेगमेंट बोलते हैं. नेटवर्क लेयर में क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं. और डेटा लिंक लेयर में क्या बोलते हैं? उसको फ्रेम्स बोलते हैं. और फिजिकल लेयर में यू कैन कॉल इट एज अ बिट बाय बिट और बिट्स आर ट्रांसमिटेड. ओके, तो इसमें एप्लीकेशन लेयर में नेटवर्क प्रोसेस, another information, these layers addresses at various layers, अलग अलग layers पे अलग अलग addresses यूज होते हैं, तो उसको क्या क्या बोलते हैं? तो जैसे एप्लीकेशन लेयर पे क्या एड्रेस है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस. अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस मींस व्हाट? लेट्स से HTTP का क्या एड्रेस है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस अगर बोला, HTTP का एड्रेस है 80. सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोर्ट एड्रेस. पोर्ट एड्रेस. जैसे SMTP है, SMTP किसकी सर्विस है? मेल की सर्विस है, तो इसका क्या एड्रेस है? इसका एड्रेस है 25, like that. Okay, so application specific address is a port address, and transport layer is also port address, you can call it, or you can call this a socket address to be more elaborate. Okay, network layer में कौन सा एड्रेस होता है? लॉजिकल एड्रेस, और also called as IP address. data link layer is a physical address, और हार्डवेयर एड्रेस is also called as MAC address. अब हर एक की साइज कितनी है? पोर्ट एड्रेस की साइज है 16 बिट, लॉजिकल एड्रेस की साइज है 32 बिट, एंड फिजिकल एड्रेस की साइज है 48 बिट्स. What is ICMP? ICMP is Internet Control Message Protocol. It works in network layer and it is used for reporting errors and performing network diagnostics. जैसे हम ping में use करते हैं ICMP protocol. The ping uses the ICMP protocol. अब यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, what is bandwidth, what is throughput, what is data rate. तो bandwidth क्या है और throughput क्या है, जरा अंडरस्टैंड कर लेंगे. bandwidth is a theoretical rate. अब जैसे ये रास्ता है, इस रास्ते में हम बोल सकते हैं कि 24 Sir, your mic is mute. सर आपका माइक म्यूट है. Yes, sir. who is muting? Okay, तो bandwidth क्या है? bandwidth is the data transfer capacity of network in bits per second. For example 100 Mbps, 1 Gbps. हम जो बोलते हैं कि हमारी LAN 1 Gbps है, वो उसकी bandwidth है. और throughput क्या है? throughput exactly उतना नहीं मिलता है. जैसे हमारा नेटवर्क कनेक्शन बोलते हैं 100 Mbps है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड हम कनेक्शन लिया, लेट्स से 100 Mbps, but theoretically it doesn't, we don't obtain 100 Mbps, we obtain less, and that is a throughput is a theoretical bandwidth, and bandwidth is the ideal bandwidth, you can call it. Okay, what is port number? Port numbers of application layer protocols. So port numbers, there are 3 types of port numbers, which is a well known ports, which is 0 to 1023. ये किसको दिए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, HTTP, SMTP, that means all the servers which provide service, well known port दिया जाता है, well known port. तो सबको पता है वो कहां से होता है? वो होता है from 0 to 1023.
1023. Another type of port is registered ports. ये हम registered कर सकते हैं ICANN के पास 102.42.49.151. ओके, अगर वो registered कर सकते हैं, और डायनामिक पोर्ट्स मतलब ये कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते. एनी एप्लीकेशन कैन यूज दिस पोर्ट्स. ओके, अब जैसे ये सर्विसेज है, जैसे अभी DNS प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन, ये कौन से पोर्ट पे रन होता है? ये पोर्ट रन होता है 53. और कौन सा सर्विस यूज करता है? ये कनेक्शन लेस विच इज UDP सर्विस, तो 53 पोर्ट पे. DNS विथ TCP इज ऑल्सो देयर विच इज इट वर्क्स ऑन 53 पोर्ट. HTTP uses a web service, it uses a TCP 80 port. HTTPS uses secured layer, it uses TCP 443 port. SMTP 25 port. POP, which is mail protocol, uses 109 and 110 port. SNMP, network management protocol, uses 2 ports, TCP, UDP. Telnet, which is remote login service, uses port 23. FTP, which is file transfer protocol, uses TCP 2021. SSH is secured cell, which uses 22 port number. So अभी यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि FTP का क्या पोर्ट है, तो आप पूछ सकते, आप बता सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन 2 ports 20 and 21. तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2 ports क्यों यूज होते हैं, व्हाई नॉट 1 port? जैसे HTTP एक ही पोर्ट यूज करता है 80, तो ये 2 क्यों यूज करता है? तो FTP का क्या है कि FTP uses 2 channels. One is a data channel and another is the data channel and another is the control channel. तो डेटा चैनल अनदर पोर्ट पे रन होता है, इसके लिए एक पोर्ट यूज होता है और इसके लिए अनदर पोर्ट यूज होता है. तो इसके लिए हमें 2 पोर्ट लगते हैं FTP के लिए. ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन? ये देखो, अभी ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. अगर हम विद इन 1 LAN कंसिडर करेंगे तो एक कंप्लीट LAN इज 1 कोलिजन डोमेन. ओके, अगर ये LAN सेपरेट कर दी राउटर से बाय यूजिंग सबनेटिंग किससे कर सकते हैं हम? राउटर से ही कर सकते हैं. एक सबनेट अलग कर दिया, दूसरा सबनेट अलग कर दिया, और सबनेट कम्युनिकेट किससे हो सकता है? जो नेटवर्क लेयर को अंडरस्टैंड करता है. कौन करता है? राउटर. तो राउटर से हम 2 सबनेट अलग कर सकते हैं. तो इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग हो गया. ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ये डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया. ओके, now where all the layers of OSI model or TCP model are located in internet or WAN? ये कहाँ पे होते हैं? अगर आपको पूछा जाए कि आप अब बैठे ओरल के लिए और आपको पूछा कि फिजिकल लेयर कहाँ पे है, दिखाओ, तो क्या बोलेंगे कि फिजिकल लेयर इन दिस LAN इट इज देयर इन द वायर्स, क्योंकि उसमें रहता है. फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, और वो कौन करता है? वो एक्चुअली वायर्स करते हैं. तो फिजिकल लेयर है वायर्स में. और आपको पूछा जाए लैब में कि डेटा लिंक लेयर कहाँ पे बताओ, यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं डेटा लिंक लेयर कंप्यूटर में भी है और वो स्विच में भी है. जो लैब में है वो स्विच में डेटा लिंक लेयर है. क्यों डेटा लिंक लेयर क्यों है वहां पे? क्योंकि वो डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर को अंडरस्टैंड करते हैं. पूछा जाए नेटवर्क लेयर कहाँ है इस LAN में, तो नेटवर्क लेयर कहाँ पे? सिर्फ कंप्यूटर में ही है, क्योंकि हमारे लैब में राउटर है ही नहीं, स्विच है, तो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है. तो कहाँ पे ये लेयर्स है? जैसे इस कंप्यूटर में ऑल लेयर्स आर देयर. इसमें फिजिकल लेयर भी है, डेटा लिंक लेयर भी है, फिजिकल लेयर भी है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर. बट ये राउटर में कौन सी लेयर्स है? फक्त ओनली 3 लेयर्स आर देयर, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क. अगर यहाँ स्विच होता तो स्विच में कितनी लेयर्स है? 2 ही लेयर है, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर. ओके, तो कहाँ पे है ये लेयर्स? अगर आपको पूछा जाए तो हर जगह पे है. जहाँ पे डेटा पास होता है वहां पे वो है, पर कौन कौन सी है इट डिपेंड्स. कि जैसे कंप्यूटर में सारी लेयर्स है, स्विच में सिर्फ 2 लेयर है, राउटर में 3 लेयर्स है, गेटवे में 4 लेयर्स है, ऐसे. ओके, so this is how you can explain the various questions asked in the during the oral, and be confident. Okay, so first of all I'll share this PDF to